Ladies and gentlemen, we welcome you all to the second leg of Chemical Week being hosted by Alfalah CLSA. Today we have with us Archroma Pakistan, a dominant player in the textile value chain in regards to chemicals and dye stuff. The company is being represented by Mr. Mujtaba Rahim, the CEO of Archroma, and Mr. Ifan Chawala, the CFO. I, Sajjad Hussain, the head of research, will be your host today. The session will begin with a presentation by the company and followed by the Q&A session. Over to you, Mr. Rahim. Thank you, Sajjad. I will give you a short overview of the company, what we are and what we are doing, and some historical background to give you the history of the company, to give you a flavor about Archroma. So starting with, can you see my screen, Sajjad? Yes, we can. Okay, so we will give a moment to safety first and start with the short introduction about the safety, because we are all going through a stressful time and mental health is very important. हम लोग चाहे घर पे हों, चाहे हम लोग ऑफिस में या अपने operations में, production plant पे, safety is the prime criteria. If we are safe, our operations are safe. तो इस stressful time mein, important is that we are collaborative, we support our associates, our colleagues, we are working with each other, and we spend quality time with the family, and having good work-life balance is very important under the current stressful times. And be mindful of our physical health, because this is the most important thing God has gifted to us. So play and keep healthy diet and sleep well in order to get the maximum out of your mental health. So from this, quickly the summary, I will give you company's orientation shortly, some corporate social responsibilities we are doing, because that is one of the most important element of our operations, a strategic and operational development, some financial outline, and then we will go to the future outlook and question answers to make it more interactive session. So if we look at the company's history, we have very strong heritage and history into chemical industry. It's starting from 1886 when Sandoz, आप सबको सैंडोज का शायद नाम ज्यादा याद होगा कि यहाँ से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 1886 में, when Sandoz Kern started manufacturing chemicals and dyes in Switzerland in 1886. Later on, 1995 में Clariant was born out of Sandoz after a spin-off chemical arm of the company. So pharma जो था Sandoz का वो Novartis में change हो गया, spin off होके, and chemical part of Sandoz become Clariant in 1995. Later on, in 1997 में Clariant ने world one of the biggest chemical producer, German chemical producer Hoechst को टेक ओवर किया और इंटीग्रेट किया 1997 में क्लैरियंट के अंदर. एंड देन लेटर ऑन 2013 में आर्क्रोमा ब्रांड वाज बॉर्न, जब क्लैरियंट ने अपना टेक्सटाइल पेपर इमल्शन बिजनेस जो था वो एसके कैपिटल को, अमेरिकन इन्वेस्टर को जो है वो उसको बेचा, तो जिसकी वजह से ये आर्क्रोमा नाम जो है स्टार्ट हुआ 2013 में. एंड लेटर ऑन 2015 में हमने एक और मेजर एक्विजिशन की आर्क्रोमा के अंदर, जो बीएसएफ का टेक्सटाइल केमिकल का बिजनेस था ग्लोबली, उसको एक्वायर किया आर्क्रोमा ने. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी हैव बिकम one of the biggest chemical leaders. This is, going back again into the history. After the acquisition of BASF, we became the world leading chemical producers for specialty chemicals. Although German giants have merged into Archroma, starting with Hoechst, and then later on BASF specialty chemical was merged in 2015 into Archroma. Later on, हमने 2016 में पाकिस्तान के अंदर मर्जर जो है BASF का कंप्लीट किया, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट जो BASF की केमिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट थी लांडी में, इट्स कंप्राइजेस ऑफ 10 एकर्स ऑफ मल्टीपर्पज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, वो आर्क्रोमा पाकिस्तान की जो थी वो एसेट में उसको हमने इंक्लूड किया. लेटर ऑन, अभी रिसेंटली
लास्ट ईयर हमने अनाउंस किया एक्विजिशन ऑफ हंट्समैन टेक्सटाइल इफेक्ट। हंट्समैन आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, इट इज बेसिकली सीबा गाइगी। जो सीबा गाइगी के था उसको अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने एक्वायर किया बैक इन 2015 एंड सीबा गाइगी वाज टर्न इनटू हंट्समैन केमिकल्स। सो बेसिकली देखा जाए तो हंट्समैन सीबा गाइगी इज आल्सो a Swiss heritage going back to the same age of 1886, 1885, and later, now we have got two Swiss companies, chemical companies into our fold, and two German giant chemical companies under the umbrella of Archroma. Basically, हमारा जो portfolio है उसमें we have specialty chemical companies, specialty chemicals of textile effects. ये textile industry के लिए we have got specialty chemicals and colors for paper and packaging industry, and we do supply a lot of raw materials to paint manufacturer, adhesives industry, and specialty chemicals for construction chemicals as well. So basically ये हमारा जो major profile है वो इसी के अराउंड स्पेशलिटी केमिकल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। रिसेंटली हमने अपने पोर्टफोलियो में होम केयर, हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग केमिकल्स को और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया है। वी आर डूइंग डाइवर्सिफिकेशन एंड वेंचरिंग आउट इनटू दिस वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ होम केयर एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग्स। Acquisition of Huntsman is a major step in our operations. Basically, Huntsman is also global leader in specialty chemicals. So now two Swiss companies are coming together. Huntsman के पास से जो हमें acquisition हुई है, we have got a very strong brand and portfolio of specialty chemicals, and mainly in textile segment. और इस acquisition के साथ हमें जो टेक्नोलॉजी एक्वायर की है, we have got plants in 10 different countries around the world. They have got some latest technologies. Their innovation pipeline is very strong, and I can say that there are some very interesting innovative products in the pipeline of Huntsman which will give us a leap into the specialty chemical industry around the world. So going into some depth of our portfolio, textile की अगर मैं बात करूं तो we cover the entire processing of textile from end to end, starting from fiber जहां से धागा बनता है और फिर धागे से कपड़ा और फिर कपड़े से जो है वो garments, and you see different articles of home textile हो, चाहे वो fashion wear हो, चाहे वो work wear हो, उसके अंदर we have got a complete coverage of products, चाहे उसमें कलर्स हो, चाहे उसमें स्पेशलिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो, we provide the entire portfolio for the textile industry. इसी तरह से पेपर के अंदर पेपर एंड पैकेजिंग में we have got speciality of optical brightness जो कि आपके व्हाइट पेपर में आपको नजर आता है। We have got some speciality of colors for packaging and some decorative papers and some very specialized sealants for the packaging industry. कोटिंग की अगर हम बात करें तो कोटिंग इंडस्ट्री में mainly we cater to the paints and adhesive industry, and recently we have started providing solutions to construction industry as well. यहाँ पे बहुत स्कोप हमें नजर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। it's a growing industry, और जो हमारी दोनों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान में, they are fully cater to provide the solutions for the construction industry. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर केमिकल्स का बहुत स्कोप है, बिकॉज हमारे यहाँ जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है पाकिस्तान में वो बहुत ही पुराने तरीके से ऑर्थोडॉक्स तरीकों से होती है। They don't use any functional products or chemicals into construction to provide the strength to the concrete or provide fast construction facilities. So उसके हवाले से we have got special products for concretes. We have got some very specialized products for waterproofing in this segment. So construction में we see big scope going forward, as Pakistan में भी ये industry future में हमारा जो
विजन है इसके हवाले से कि दिस विल ग्रो अ लॉट पाकिस्तान। और अगर हम रीजन में देखें तो रीजन के अंदर भी पाकिस्तान स्टिल हैज टू गो long way catch up with the regional countries. इसमें हम देखते हैं कि we have got good strength in cement in Pakistan. We have got good steel industry. So what is lacking is support of construction chemicals to make the value addition out of this industry. So construction chemicals में scope बहुत bright नजर आता है going forward. And also we have started recently range of unsaturated polyester resin जिसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है going in the area of construction जहाँ पे आप ये beams और steel bars को आप unsaturated polyester resin से replace कर सकते हैं and it gives you even better strength than steel and it's very light in weight. तो आपकी overall construction की cost, construction का load आप इससे कम कर सकते हैं without compromising on the strength of the construction. So this is the futuristic chemistry for Pakistan, not only in construction but जहाँ पे वो आप transport pipes बनाते हैं, underground pipes for transportation of liquids, storage of liquid chemicals and other household items can be produced with this UPR, including some parts of automobile and also shipping industry. So बहुत बड़ी field है globally unsaturated polyester resin की जो हमने यहाँ पे अभी production start की है at one of our site in Ladi. New market segments हमारे लिए बहुत important है because we have मल्टीपर्पज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और इसके अंदर न्यू मार्केट सेगमेंट में लोकलाइजेशन का बहुत स्कोप है बिकॉज हम वी हैव फेल्ट दिस ड्यूरिंग दिस शिपिंग क्राइसिस इन द प्रीवियस ईयर जब पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल्स वर वेरी डिफिकल्ट टू इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान एंड करंटली भी अभी जो हमें क्राइसिस इंपोर्ट के अंदर नजर आ रहा है तो लोकल manufacturing of raw materials for home care and other industry is the real winning point going forward. So ये बहुत important है for our chemical industry that we diversify more into localization, supporting the value-added industry, especially consumer industry in Pakistan. This is our business philosophy in all phase and areas of our application. Whatever we produce, we have to first qualify that it is safe to use, safe to produce, and efficient means efficient to say resource saving means water की एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए एनर्जी सेविंग जो है प्रोसेसेस सॉल्यूशंस होने चाहिए एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यू एडिशन मींस दैट our solutions should enhance value for the end product, be it textile, be it construction chemicals, be it home care and other areas. So this is, I think, the most important feature of our business, which, make us the leading solution provider in Pakistan. Giving a short history of Archroma in Pakistan, we had the advantage of entering very early in Pakistan. In 1947, we started our very small distribution setup, Karachi, close to Kharadar. We have a small setup here. You can see in this picture here that a small Sandoz triangle is visible. Then later on, 64 में हमने अपना पहला पायलट प्लांट पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया लिहारी में विद अ स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ डाइज. उस जमाने में मोस्टली पाकिस्तान जो था वो ये कारपेट हैंड नॉटेड कारपेट प्रोडक्शन ज्यादा होती थी हमारे यहाँ. So उसके लिए हैंड नॉटेड कारपेट के लिए डाइज की मैन्युफैक्चरिंग एंड सम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हमने लिहारी में शुरू की 1964 में. एंड लेटर ऑन 80 में we started full-fledged production at Jamshoro site, जहाँ पे हमने dye stuff, जहाँ पे optical brighteners और other specialty chemicals की production start की. और यहीं पे जामशोरो की साइट पे हमने उसी वक्त
Pharmaceutical Sandoz का भी plant जो था वो startup किया. Later on, we have added very unique facilities into Jamshoro, such as zero discharge facility, which is unique in the world of chemicals production. दुनिया में कोई और chemicals और dyestuff plant जो है वो zero discharge पे base नहीं करता. We are the only facility, and this is the award-winning facility globally, जो कि हमने फ्रांस के अंदर there was a competition of sustainable chemical production, and Jamshoro facility of Archroma got this award among 600 entries filed in this competition. So बहुत unique है, बहुत prideful हमारे लिए है कि we have this facility which is unique in the world. Later on हमने 2018 में Indigo production start की Jamshoro में, which is also a unique facility producing aniline free indigo in the world. किसी और के पास ये production facility नहीं है. We have the pride that Pakistan is the only country in the world producing aniline free indigo for the denim industry. Zero discharge पे I will not go into the detail. This is something, as I said, prideful for us. Here you can see that we have received this Corporate Water Stewardship Award, France, where Jamshoro and Pakistan was recognized as the most sustainable water stewardship facility. हमारी R&D facilities हैं यहाँ पे कराची में, which is also unique. We have done a lot of patents from this R&D facility in Karachi, and we provide services to our end users such as textile, paper, and construction industry. Some of the recognitions, as here you can see, EcoVadis, दुनिया में सिर्फ top 1% companies हैं जिनकी rating platinum, जिनके पास rating है sustainability rating. It's a very prideful thing for us. Pakistan Stock Exchange Best Company Award since last 17 years. Year after year, Archroma is among the top company on Pakistan Stock Exchange, and rest of the awards you can see the screen. Very prestigious awards coming from UN Global Compact, चाहे वो National Forum for Environment हो, Employer Federation, and Cradle to Cradle. All these are very prestigious awards received by Archroma globally and in Pakistan also. Quickly, business portfolio अगर हम देखें तो predominantly it's textile effect business in Pakistan, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे कंट्री को भी. अगर हम देखें तो कंट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द मेजर एक्सपोर्टर, एंड वी आर सर्विंग द मेजर एक्सपोर्ट industry of the country. Paper and coating जो है, it is about 10% of our business, but very important portfolio for us. So this, I would say, a short overview. Or Ifan, if you would like to give some, I forgot this thing. This is also important, very important. Some corporate social responsibility initiative we are doing. चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो प्लांटेशन हो जामशोरो में और कराची में, चाहे वो हमारे जो है हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज को, द बेस्ट क्वालिटी वाटर which one can afford in Pakistan, we provide to our communities in Jamshoro. So very short, हमारा जो ये social responsibility का angle है, we do it very, very strongly, and it's very close to our heart. Aniline free, I will not go into the detail. I mean, if अगर सवाल होंगे तो then I will capture this. Home care portfolio cover कर लिया है. Some of the customers, as we said, home care के Colgate Palmolive हो, चाहे वो P&G हो, चाहे Unilever हो, they are all our customers. Construction chemicals I have covered a bit already. Production capacity अगर हम देखें तो over 100,000 tons की capacity है, multifunctional है हमारे plant, दोनों plant. We can do a lot of chemistries in both these plants. Ifan, would you like? If you want to, I'll just quickly run you through the financials. Otherwise, we can also go into Q&A. I mean, I'm sure आप लोगों ने देखे होंगे हमारे accounts. Idea was to give you more background of the business. Please continue. If you think it's relevant, please do. Okay. So basically, इधर यहाँ पे sales की picture आप लोगों को दी हुई है.
इसमें you can see our growth pattern in the sense के 2019 में क्या था, 2020 में क्या है. I mean, it's a continuously growing company. और portfolio wise भी, जैसे I think you would understand now after what you have seen in the previous slides, और performance wise भी. And the other interesting aspect is the green on top, which is at the moment more important to us as a company also and as a country also. हमारा export भी जो है वो over the years grow करता चला गया है. It constitutes roughly about 25 to 30% of our overall portfolio sales, which is very critical for us even in these challenging times. This is something which has really supported us in terms of foreign exchange availability and dealing with banks, I would say. Some numbers, हमारा क्योंकि ये listed company है और disclosed numbers हैं सारे, we just trying to give you कि हमारा local currency में जो है वो there was an 11% growth. Export was more or less similar. Our 6 monthly sales are 8% plus. COGS was a bit higher because of the reasons you know. एक तो raw material की prices कुछ शुरू या यूं समझ लें हमारा financial year क्योंकि September या October से शुरू होता है, तो beginning first quarter for us is October December quarter. It was a bit higher, and then it's mainly currency challenge, I would say. You see it here in local currency when we were trying to catch up with the currency, जिसकी वजह से हमारी COGS is higher and profitability you can see is slightly negative. The other big number is finance cost, which I'm sure you all understand is for the same reason. It's ज़्यादातर अगर हम डिटेल में जाएंगे नीचे तो I mean it's mainly exchange loss because of severe devaluation in last 6 months of USD, and of course borrowing cost भी ramp up होती चली गई है. So this is basically that our profitability at the end in 6 months has been half of what you see. The growth on the top line does not reflect in the bottom line as such because of these reasons. This is just a breakup. COGS में major जो है obviously constituency है. Distribution, marketing expenses are more or less in the same line. Admin expenses भी हमारे stable हैं. Others are usually consequential, WPF, WWF. But the major change you see is in the bottom line finance cost. कि वो 1 to 2% के around होती थी. वो increase कर गई है 2023 because of exchange and because of higher financial charges. ये just conversion है into earnings per share which have been lower as already explained in the previous slides. Dividend payout history जो है वो हमारी strong है. Historically, I mean it's a high dividend paying company. You can understand हमारे sponsors जो हैं they are outside of Pakistan. Obviously, payout matters to them, and it's a profit generating company at the end of the day. So usually हमारे यहाँ payout high होता है despite कि हम ऐसा नहीं है कि investment नहीं कर रहे होते. We are also investing, but we also pay usually on a higher side in terms of dividend. Future outlook, I mean I think it's globally अगर हम देखें तो the challenge remains. Those of you who are covering global entities या international operations, so you can understand कि इस वक्त जो है वो globally overall situation भी इतनी अच्छी नहीं है. अगर even if we compare it to Pakistan के local level के भी issues हैं, but international challenges अपनी जगह हैं because of commodity prices जो हैं वो energy की और commodities की ऊपर चली गई हैं. I mean developed world like US, Europe, जहाँ लोगों ने कभी at least अपने colleagues से हम बात करते हैं डिस्कस करते हैं तो लोगों ने जो है ना 30-40 साल में इतने इन्फ्लेशन रेट्स नहीं देखे थे जर्मनी में यूएस में जो आज उनको देखने के मिल रहे हैं. तो आई मीन दिस इज अ बिग चैलेंज. दैट्स व्हाई व्हाट वी अंडरस्टैंड कि लोगों ने दूसरी चीजों पे कट डाउन किया है एज कंपेयर टू वी से एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स. तो मोर कंसंट्रेशन इज स्पेंडिंग इज ऑन एसेंशियल्स, less on non-essentials. Energy cost आप कोई भी business आज उठाएंगे उसकी ज़्यादा है because of this reason. Same goes for us as well, and same reason we are also affected. Obviously, the other challenge locally is balance of trade and forex situation in Pakistan, which I don't need to explain to the community that we are talking to at the moment. And these are a few challenges which are let's say affecting operations or need to be faced accordingly.
और just to add कि इसमें जो opportunity create हुई है वो भी important है just to share कि because of these challenges, I mean there are also opportunities for companies like us who produce locally, whose competition is actually import. You know, we do a lot of import substitution and we provide a lot of solutions to our customers who otherwise don't have any other option inside of Pakistan. I would say they usually have to go outside of Pakistan to get this kind of support in terms of manufacturing, support as you just heard from Mujtaba Saab in terms of R&D, in terms of supply chain. जिस किस्म का support हम अपनी customers को दे रहे हैं यहाँ local level पे, वो हमारा competition mainly import ही है. Basically, if we look at it, there are smaller players here and there in some chain of the whole, I would say, a portfolio that we have. कि जहाँ different type of competition है locally या कुछ formulators हैं जो करते हैं, but mostly it's all import. So we've also got a lot of opportunity, I would say, in terms of business growth. Although के production लोगों की slow है textile में भी और other segments में भी, but there is more demand. If we talk about Archroma, we have more demand from customers in terms of products which they were previously importing. और हमें ना अपना market share improve करने की बहुत opportunity मिली. So this is it. I think हमने कोशिश करके इसको half an hour के कुछ करीब ही कर लिया. And then I open the floor for questions. I request participants please use the hand raise feature if you have any questions, or you can also write your questions in the chat box. Irfan sir, I'll first start off with my own questions. What are your key markets for exports? I think what are key products and the markets for exports? What do you export? Like indigo is your prime export or your other chemicals? Indigo is the primary export product, I would say. और इसमें एक unique feature जो आपने सुना मुझको सबसे वो aniline free भी है, which is unique to the world actually. We only manufacture in Pakistan. Aniline is a substance which is found in indigo blue color. Which is actually taken out or extracted. It's a carcinogenic. Proven carcinogenic compound contained in जो हम लोग ये blue jeans पहनते हैं ना, तो इसके blue color के अंदर ये होता है. तो we are the first company in the world जिसने कि इस carcinogenic compound को extract करके safe to wear and safe to use product बनाया है. And we are the only producer right now of such a product in the world. तो बेसिकली दूसरा सवाल आपका इसी से रिलेटेड ही है कि जो कंट्रीज में डेनिम की प्रोडक्शन होती है, यानी अगर हम ले लें बड़ी मार्केट्स, टर्की ले लें, बांग्लादेश ले लें, वियतनाम ले लें, थाईलैंड ले लें, वो हमसे इंपोर्ट करते हैं ये प्रोडक्ट. So we export to all the countries in the region. Europe में भी जाता है, जापान में भी जाता है. Lately we have also exported to Central Asia. Uzbekistan is China. January, right? China, we also exported to China. So countries जहाँ के आप शायद मेरा ख्याल है generally लोगों से बात करेंगे कि वो इन countries में हम export करते नहीं हैं as Pakistan, but I mean as Archroma we do. It has such a big competitive advantage in the world. Are you utilizing your capacity fully in terms of indigo, or do you still have surplus capacity? Mujtaba साहब can correct me. हमने मेरा ख्याल है 4 expansions की हैं in last 5 years in indigo. Less than half of what we are at the moment हमने start किया था और उसको हम continuously. In fact, last expansion was done last year. October में हमने complete किया with the expansion of 2,000 tons of this product, or we are running to the full capacity right now. Maybe we have to now think for another expansion. And what percentage of your sales comprise indigo sales? Around 40% to 50%. अगर आप ले लेंगे हमारा portfolio का, तो it's a big component. 40 to 50% is indigo. And any reason for decline in exports on a year-on-year basis in dollarized terms? International markets ही हैं. I mean, you can say कि थोड़ा सा वहाँ पे स्लो डाउन हुआ है. एक इम्पैक्ट जो आपको स्पेशली इस साल में नजर आ रहा है was earthquake in Turkey. तो वो हमारा बहुत मेजर मार्केट है जहाँ पे कि स्लो डाउन हुआ था and now it has again actually started to ramp up. तो वो एक रीजन है कि आपको यहाँ नंबर्स थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं. तो मैं थिंक और also इरफान एक रीजन ये भी है कि जो ये यूएस के अंदर एंड यूरोप में जो रिसेशन sort of situation है, उन्हें फैशन वेयर में
खर्चा कम कर दिया. So the retailers and brands are buying less globally. उसका पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट है और ये ओवरऑल टेक्सटाइल के अंदर स्लो डाउन है ग्लोबली अगर देखा जाए. नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इफ वी लुक एट अदर टेक्सटाइल कंट्रीज सच एज चाइना और इंडिया और वियतनाम, आपको ये हर जगह ये ट्रेंड नजर आएगा. ये कंज्यूमर बिहेवियर है during the current situation कि they are investing less in fashion wear और ज्यादा वो जो है ना focus जो है उन चीजों पे है जो necessities. So any more expansions planned in Indigo, and will they be significant enough to have a material impact on your revenues going forward? इसमें Indigo we are planning कि इसमें हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सोच रहे हैं. जो हमारे जो रॉ मटेरियल है, मेजर रॉ मटेरियल इसमें हाइड्रोजन है. उसके तरह हम वी आर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन इन हाउस. ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन का प्लान कर रहे हैं. We are also thinking for going towards renewable energy source. उसके ऊपर काम कर रहे हैं. Again, this all depends. ये प्रोजेक्ट है हमारे. Depending on the internal situation and some external factors in the business, we will finalize these projects. So how big is the hydrogen costing in terms of the overall cost of Indigo, and where do you source it from currently? Currently हम लेते हैं इनसे ये जो हमारे पाकिस्तान ऑक्सीजन से हम परचेज करते हैं. and the cost of hydrogen would be roughly in the range of 10 to 15% of the total cost. But this is critical. आप सिर्फ cost पे नहीं देखें. अगर मुझे हाइड्रोजन किसी पाकिस्तान ऑक्सीजन का प्लांट डाउन हो पावर की वजह से या कुछ हो तो मुझे अपनी प्रोडक्शन जो है ना उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है. तो it's critical raw material for us. What kind of capex cost or maybe capacity would you need to complete this green hydrogen project? Because you will of course have to go towards renewables, right? Basically Sajjad, I mean थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है ये. इसके दो I mean अगर मैं टोटल बात करूं तो it's close to 10 to 12 million dollars we are talking about in terms of investment. इसमें हम एक्चुअली प्लान कर रहे हैं. इट्स नॉट ओनली दैट वी वांट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, वी वांट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन. सो दैट्स अ बिगर प्लान फॉर द कंपनी. वी वांट टू प्रोड्यूस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी. तो हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो भी मुस्तफा साहब ने रेफर किया इज लिंक्ड टू दिस. थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाए. आई मीन वी वांट टू शिफ्ट सम ऑफ आवर एनर्जी सोर्सिंग टू सोलर एंड सम टू विंड पावर, देन हाइड्रोजन. सो maybe we invest into energy first and then into hydrogen, or maybe into hydrogen first and then bring in the energy. So that's the project we have at the moment. ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन इज द फ्यूचर एनर्जी सोर्स ऑफ फ्यूल. बिल्कुल ये भी है एक हम इसके अंदर जो जा रहे हैं. वी नो दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर. और ग्रीन हाइड्रोजन का पर्पस ही यही है हमारा कि दैट विल गिव अस एज over our competitors who are producing such products globally. Because जितने भी अब brands हैं, चाहे आप Levi's को ले लें, आप Gap को ले लें, आप C&A को ले लें, आप you name any big brand, Gucci को ले लें, they are all looking towards sustainable products and the storylines. Agreed. And this 10 to 12 million dollars includes the back-end integration of power with the plant, right? Yes. That's something interesting. Okay. There's a question in the chat box regarding unsaturated polyester resin. How much is it used in developed nations instead of steel? काफी. Mostly जितने भी अगर आप developed nation को देखें, they are all shifting towards this, lightweight construction material. अब हम तो अभी भी 50 साल या पता नहीं 200 साल पीछे हैं. दुनिया में we are still using ये जो आयरन की बार्स होती हैं. अब दुनिया इससे निकल गई है. अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल के अंदर भी अब मेजर पार्ट्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड पॉली के हैं. ये जितनी भी शिप्स बनती हैं, बोट्स बनती हैं, इसके अंदर कोई भी अब आयरन एंड स्टील यूज नहीं कर रहा. मोस्टली यूपीआर रेजर यूज होता है. ये पाइप्स जो होते हैं, कन्वेयर पाइप्स आपके अंडरग्राउंड पाइप्स बड़े बड़े, दे आर ऑल मेड ऑफ अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजन. अब दुनिया में कोई भी मेटल के नहीं बनाता. इसको आप ग्लोबली भी देखेंगे ना सज्जाद, तो आई मीन ये दिस इज समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग. दुनिया की जो भी सिचुएशन हो, दिस इज ग्रोइंग एट 6% पर एनम. CAGR जो है वो इसका
6% है, तो it's quickly taking over wood, it's quickly taking over metals. ये जो एरोप्लेन्स के इंटीरियर होते हैं ये सारे भी यूपीआर हैं। जैसे बात की गाड़ियों की बॉडीज हैं वो सारे यूपीआर हैं। कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इट्स सो लाइट वेट, तो ये स्टील को रिप्लेस कर रहा है। जो आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं वो लाइट हो जाते हैं, इजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्विक होते हैं। तो काफी इस पे ग्लोबली बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है और हम पीछे हैं as मुश्तबा साहब said, but this is happening, this will happen. There is lot of room for improvement. मुझे तो इसमें बहुत potential नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इसका मार्केट साइज क्या है अभी? And have you onboarded any big clients in this regard? हाँ, थोड़ा सा जरा डाइवर्स सा है। जैसे मैं अगर हम एक एग्जांपल ले लें, बटन इंडस्ट्री है, वो भी यूपीआर यूज करती है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट के लिए भी यूज होती है। फिर अगर आपने ये देखे हो कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, जो पहले ड्यूपॉन्ट में कोरियान के नाम से मशहूर होते थे किचन्स जो बनते हैं, they are artificial plastic and marble types, artificial stone is the right word. तो वो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लग गई है पाकिस्तान में। they are producing this, they also take it from us. Storage tanks जो होते हैं, they are all UPR plus। अभी जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है जहाँ पे कि जैसे ये जो बाहर अगर आप लोग देखते हैं स्टील के वो लगे हुए होते हैं, के इलेक्ट्रिक के, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, स्टील के इलेक्ट्रिक बॉक्सेस लगे हुए होते हैं, दे आर ऑल गेटिंग रिप्लेस्ड विद यूपीआर पैनल्स जो होते हैं, बिकॉज कि वो जंग नहीं लगेंगे, उनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आई मीन आई वुड से कि आई एम श्योर इट्स मोर देन $10 million एज ऑफ नाउ, बट इट्स ग्रोइंग वेरी रैपिडली। पाकिस्तान में थोड़ा और तेजी से ग्रो कर रही है बिकॉज चीजें आहिस्ते आहिस्ते उस पे कन्वर्ट हो रही है। The market size is $10 million, right? Yes. And how much of it do you cater? अभी हम किसी हद तक एंटर हुए, अभी हमारी सेल कम है, वी आर लेस देन $1 million आई वुड से। अगर हम मार्केट अपनी पेनिट्रेशन भी देखें, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रूम टू ग्रो। You have 10% of the market share, right? Yes, less than 10 आई वुड से currently. And UPS के ये UPR के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है? हो सकता है। अभी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वी आर वर्किंग विद सम पोटेंशियल कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सेंट्रल एशिया। तो वहां से काफी इंटरेस्ट है इस पे, तो हमारी काफी भी सॉर्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। देयर इज नथिंग आई कैन से कि कोई हमें ऑर्डर मिल गया है कुछ, बट इस पे जो है ना डिस्कशन चल रहा है। सो इट इज इंटरेस्टिंग फॉर सम ऑफ द कंट्रीज हियर इन सेंट्रल एशिया to take it from us. If you mentioned Central Asia, of course, it's a very new market for us. We just had access to it a couple of years back. So what is the strategy to capitalize on this opportunity? इस पे काफी काम हो रहा है। हम लोग देखें अभी एज अ कंट्री भी इस पे काफी काम होना बाकी है। I mean you understand कि there are a lot of how should I say non-tariff issues, barriers, कि आप बॉर्डर पे जाते हैं अफगानिस्तान के, मतलब मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊं, लॉजिस्टिक्स वालों से अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा ट्रक जो है वो पेशावर से आगे जा नहीं सकता, you know, because the terrain is very tough. वो चढ़ाई है टुवर्ड्स काबुल अगर आप जाते हैं, तो पहला काम ये होता है कि बॉर्डर पे ट्रक चेंज होता है, वो ट्रक आता है जो सेंट्रल एशिया में ट्रेवल कर सकता है। फिर देयर आर इश्यूज लाइक कि वो कंटेनर खुलता है, वो यहाँ पे भी चेक होता है, अगर वो उज़्बेक बॉर्डर पे पहुंचता है तो वहां पे भी चेक होता है, उससे ऊपर जाता है तो भी चेक होता है। तो दे आर वर्किंग ऑन अ मॉडल समथिंग लाइक ईयू में जो मॉडल है, ईयू में साउथ ऑफ यूरोप से लेके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक एक ही ट्रक चला जाता है, बिकॉज उसके पास पासपोर्ट है बॉर्डर क्रॉस करने का और वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो वो चीजें यहाँ पे नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, तो इस किस्म के चैलेंजेस हैं। अभी हमने कुछ एक्सपोर्ट्स किए, जैसे मैंने आपको बताया उज़्बेकिस्तान, और अभी हमने रिसेंटली अफगानिस्तान भी स्टार्ट किए एक्सपोर्ट। आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस एज वेल, अदर देन के प्रोडक्ट तो अवेलेबल है और हम कॉम्पिटिटिव भी हैं, हम दे भी सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आई वुड से। The only limiting factor is the logistics. Otherwise, you have all the access and you are competitive in that market as well. हाँ, competition is not an issue because देखिए मैं आपको बेसिक बताऊं, जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, we all understand very easily, especially in last 1 year, इनकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो रशिया से नीचे बना हुआ है। अगर आप समझे इसको, लॉजिस्टिक्स को, हर चीज रशिया से आती थी, या वो था ही रशिया इफेक्टिवली। तो अब ऐसा है नहीं, अब क्योंकि जब ये वॉर हुई है उसके बाद से बहुत सारी इनकी जो सप्लाईज हैं वो ड्राई आउट हो गई है। So they are now buying from Turkey, they are buying from China, they are even buying from Iran, they are also buying from India via Iran. ये सब हो रहा है so because they need to survive. और ये जो कंट्रीज हैं ये ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, they are rich.
अगर आपने थोड़ा बहुत कजाकिस्तान का पढ़ा हो, इनकी हाईएस्ट इंडस्ट्री या रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री वो गोल्ड है. सो दे हैव गोल्ड, दे हैव मनी, दे कैन बाय. आई मीन होता है ना, परचेजिंग पावर भी है. रिच कंट्रीज हैं, अच्छे रिच एरियाज हैं, तो इस तरह के इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और दूसरी चीजों के जिन पे काम करने की जरूरत है टू सप्लाई. कंपटीशन, आई थिंक वी कैन कम्पीट विद टर्की, विद Iran, and also with neighboring countries. And then there's a question ke second quarter margins were high and first quarter were very low. So can you give us some guidance in regards to the sustainability of the current margins, which are around 31%? हाँ, ये actually it's more of a Pakistan specific situation जो हम लोग सब बैंक से और एलसीज के इश्यूज से गुजरे हैं. तो वो हुआ ये था कि सेकंड क्वार्टर में जैसे हमने आपको बात की कि एक व्यू तो ये है कि बिजनेस स्लो डाउन हुआ, लेकिन एज आर्क्रोमा वी गॉट मोर अपॉर्चुनिटी आई वुड से. तो हमारी जो 3 महीने थे ना, विच इज कैलेंडर ईयर का क्वार्टर 1 और हमारा क्वार्टर 2 होता है, एक्चुअली वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज हमने उन तीनों महीनों में रिकॉर्ड सेल्स किए मंथ ओवर मंथ. तो इनफैक्ट हुआ ये कि अप्रैल मई में हम शॉर्टेज में चले गए बिकॉज वी वर शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच नाउ वी आर रिकवरिंग. हमारा मई भी थोड़ा सा स्लो है, बट जून से हम वी विल बी बैक ऑन levels that we had in January. So we have a lot of demand for our products. So January, February and March were very strong months. तो इसलिए हमने वो recover कर लिया जो हमारा loss था पिछले क्वार्टर का. And in this quarter also हमारी recovery होगी और fourth quarter पे we are more relying कि उसमें हम जो है ना वो पिछले साल को beat कर लेंगे based on what we see now. Since you mentioned LC restrictions, so how did it benefit you? Not only in terms of the volumes, of course, people were not able to import it, but did it also help you in terms of pricing? Were you able to charge premium pricing to your local customers? Premium तो शायद ना कहें हम, but to some extent हमें जो है ना मार्केट शेयर गेन की है. मतलब हमें वॉल्यूम्स में बेहतरी मिल रही है इसकी वजह से. उसका रीजन ये है कि लोगों को इंपोर्ट करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं एलसी खोलने में, हमारा चूंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें भी रॉ मटेरियल्स में चैलेंज आता है, बट वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड. तो सर्टेन वैल्यू एडिशन और जो यहाँ पे रॉ मटेरियल के बाद हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वी गेट सर्टेन एडवांटेज ओवर इट. तो मैं ये कहूंगा कि हमें वॉल्यूम का बेनिफिट ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू प्राइस. प्राइस एक्चुअली हमारे जो कस्टमर्स हैं दे आर ऑल अंडर प्राइस प्रेशर. अगर आप टेक्सटाइल को उठाएं तो पिछले 20 साल में हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं दे वर नॉट एबल टू गेट द प्राइस इंक्रीज. तो उनको अपनी कॉस्ट को ही इम्प्रूव करना होता है, एफिशिएंसीज इम्प्रूव करनी पड़ती है, एंड दे आर पुशिंग देयर सप्लायर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट. सो प्राइसेस पे उनके प्रेशर होने की वजह से we could not increase the price, but volume हमें definitely बेहतर मिला है. मैं इसमें एक चीज और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि उनको ना एडवांटेज नजर आता है हमसे लेने में, because if they go for imports they have to keep stocks for 3 months, 4 months and face all these challenges. और सबसे बड़ी चीज इरफान ये कि उनको पता नहीं होता कि जब उनको मटेरियल आएगा तो डॉलर में क्या करेंसी रिस्क होगा. They can avoid it. Risk भी हम ले लेते हैं. What percentage of your raw material is imported, and does having exports help you in that regard? हमारा तकरीबन 70 to 75% रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेड है, बिकॉज बहुत सारे रॉ मटेरियल जैसे यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान में, तो वी हैव टू इम्पोर्ट आउटसाइड. तो यस, एंड just to relate it to exports, export हमारा 25 to 30%. So obviously as a company to gain or to balance this out, we also want to have a 1:1. हमारा टारगेट ये है कि हम एक्सपोर्ट भी इतनी कर लें कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कवर कर सकें, बिकॉज एट द मोमेंट जो आपको हमारे फाइनेंशियल से भी नजर आ रहा है कि हमें हिट लगती है, वी आर शॉर्ट ऑन डॉलर्स बेसिकली. तो वो हिट के लिए हम भी काम कर रहे हैं. आई थिंक एज अ कंट्री भी शायद हम लोगों को जरूरत है ये काम करने की, बट वी डू हैव अपॉर्चुनिटीज. जैसे भी हमने बात की इसकी सेंट्रल एशिया की, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू गेन एक्सेस टू दिस मार्केट, बिकॉज वो नेचुरली आपके पास है. लेट्स से ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी ऐसी है कि यू कैन बीट आउट इंडिया इजीली. अगर आपने लोकेशन ऐसी है पाकिस्तान की समहाउ कि वो लोकेशन इंडिया के पास एडवांटेज किसी के पास वो एडवांटेज नहीं है. तो I mean there are things which we can really benefit from. Another question, the EOGM notice of today,
the acquisition notice, please guide what the company does, what the connection with your company. I think they're talking about the Huntsman. जी जी जी, मैं सिर्फ बता देता हूँ थोड़ा सा, वो वाला पार्ट जी। शायद हमने उसमें कवर नहीं किया। देखिए ग्लोबली तो एक्विजिशन हो गया है, हंट्समैन को अक्वायर कर लिया, हंट्समैन के टेक्सटाइल बिजनेस को आर्क्रोमा ने अक्वायर कर लिया। लोकली व्हाट वी आर डूइंग इज इट्स स्टिल अ सेपरेट एंटिटी ओन्ड बाय द सेम ओनर, लेट्स पुट दिस वे। उसको हम मर्ज कर रहे हैं आर्क्रोमा पाकिस्तान में, तो उसके लिए हमने ईओजीएम भी आज ही वो नोटिस गया है। वैसे तो मर्जर की स्कीम का हमने अनाउंसमेंट कर दिया था स्टॉक एक्सचेंज में कपल ऑफ वीक्स बैक, बट अब वो ईओजीएम भी प्लान हो गई। हमने कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दी है, जो उसका प्रोसेस होता है फॉर द मर्जर, एंड इट्स इन द प्रोसेस। तो उससे रिलेटेड हमने ईओजीएम प्लान की हुई है 23 जून, तो उसका नोटिस आज गया है। और इफेक्ट उसका ये होगा कि ये जो कंपनी है हंट्समैन टेक्सटाइल इफेक्ट्स पाकिस्तान, ये गोइंग फॉरवर्ड आर्क्रोमा पाकिस्तान में मर्ज हो जाएगी। ये हंट्समैन जो पाकिस्तान है, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल लाइक करंटली? बहुत कम है बहुत कम है। हम इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जैसे मुश्ताबा साहब ने एक्सप्लेन किया कि समहाउ ग्लोबली हंट्समैन काफी स्ट्रांग है, बट पाकिस्तान में जो है ना, वो हंट्समैन इज लाइक 10% ऑफ व्हाट आर्क्रोमा इज, बट उनका जो ब्रांड और उनके कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन एट द मोमेंट, सो वी सी अ लॉट ऑफ upside to getting products from Huntsman. And the merger will be done through share exchange, right? Yes, absolutely. And in regards to your vertical integration, do you plan to make any of your raw materials locally? ये एक ongoing process है, I would say. Selective हाँ, कि कहाँ पे हमें benefit है, उसके ऊपर we are always working on this. This is ongoing रहता है, और हम देखते हैं कि हमें insourcing में कहाँ benefit नजर आ रहा है. We do it and we do it vertical or horizontal, whatever. हम लोग वो value addition point of view से, this is, I mean, within our company we can say this is an ongoing process. ये होता रहता है, review और evaluate, और हम इस तरह के products add करते रहते हैं. Please share volume of Indigo sales year on year. Are the sales coming down due to slowdown in textiles? हाँ, इंडिगो की सेल यस कम है लास्ट ईयर से, जिस तरह से हमने बात की। वॉल्यूम्स एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं होंगे, बट आई कैन शेयर विद यू लेटर ऑन, बट वी आर अबाउट 15 to 20% less as compared to last year, basically. This is reflected in textile industry. जो अगर हमारी tenant board को देखेंगे तो वो भी more or less यही situation है. So it's directly related to the denim production. बल्कि I would still say कि उसमें भी हमने market share gain ही किया है, कि import कम की है, denim producers ने हमसे लिया है फिर भी ज्यादा, लेकिन the loss is still there. Import and your production, what is the composition like? How much market share do you have, and are there any other local manufacturers of Indigo? देखिए, Indigo के local manufacturer हैं. I would say we have more than 60% of the market share currently. इसमें हम import से भी compete कर रहे हैं. There are imports from China, there are imports from Germany, there are local producers also, but we have major share, like 60% plus Pakistan. And how much is imports? Import का देखें, I would say कि अब recently बहुत कम हो गया. Imports has got only 10 to 15% share left. और major हमने जब local production start की तो we took over all the imported share into Archroma. बहुत बड़ा benefit है local manufacturing का इसका. It's a bulk item. ISO tanks में import होता है. It's a DG good. Imports के अंदर काफी लोगों को challenges हैं. फिर supply chain के अलावा इसके अंदर a lot of cash flow involvement in this item. So local production होने की वजह से we have a good share of the market. What are the margins on each of the business segments? For example, Indigo and your paper and packaging, home care and construction individually. Different होंगे, range है. I mean, I cannot say कि कितने, because इसमें ना अगर समझने वाली बात है कि इसमें कुछ specialty products भी हैं. जैसे अगर हम paper में जाएंगे, there are specialty products in dyes also, in chemicals, in packaging also, in coatings also. तो वो उनकी prices different हैं. वैसे तो आप margins हमारे फाइनेंशियल से निकाल सकते हैं. दे आर यूजुअली इन द रेंज ऑफ 25 to 30%, 30 से ऊपर भी चले जाते हैं. बट इसमें कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिसके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, और
कुछ प्रोडक्ट्स होंगे मे बी दे कम एट 20%. So I can only say कि range is there 20 to 50% depending on कि प्रोडक्ट की जो है ना वो स्ट्रेंथ क्या है और कितना वो एडवांटेज देता है कस्टमर को in terms of value addition. You're very hopeful of the home care and construction segments, right? So do they outpace your current margins या ये around इसी range के अंदर है? थोड़े से जो इनके वॉल्यूम प्रोडक्ट्स है ना सजाद, उसमें जो है वो मार्जिन्स कम है, लेट्स एडमिट दैट बेसिकली, बट उसमें वॉल्यूम बहुत है बेसिकली, और आज के दिन वो इंपोर्ट होते हैं ज्यादातर। इसमें इरफान जो बड़ा एलिमेंट है वो ये कि हमारा जो कंपटीशन है ग्लोबल जायंट्स के साथ है, साबिक के साथ है, दो केमिकल्स के साथ है, फ्रांस के अंदर फ्लर्जर के साथ है। तो ये जो है ना जायंट्स हैं, दे वर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड वेरी स्ट्रांगली, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके इनसे कॉम्पीट करना पड़ता है, बट हमारा जो एडवांटेज है वो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल सप्लाईज है। हमारा जो सप्लाई चेन है, वी कैन सप्लाई द बाउजर, मोस्टली बाउजर्स में लेते हैं या आईबीसीज में, बिल्कुल हम 3 दिन में जामशोरों से सप्लाई कर देते हैं। इनको अगर इंपोर्ट करना पड़े तो इट्स अ 90 डेज प्रोसेस। एलसी खोलेंगे, इंपोर्ट करेंगे, then they have to keep the inventories for 90 days lead time and all that. तो वो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। कोविड के बाद ना आई थिंक शायद अगर किसी को नहीं भी समझ थी ना तो उसको सप्लाई चेन एडवांटेज की समझ हो गई है। दैट्स व्हाट इट इज। आई मीन यू नो इट हैज चेंज्ड द वे पीपल थिंक नाउ, बिकॉज इट्स, अगर आप आज की जैसे हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही जैसे हमने कहा कि डॉलर पे रिस्क ले रहा है इंपोर्टर, सप्लाई पे रिस्क ले रहा है कि उसको 3 महीने में मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर इन्वेंट्री कैरी कर रहा है आज के इंटरेस्ट रेट्स में 22% बैंक का काइबोर है आज। तो मतलब ये सारी चीजों पे अगर कोई लोकल सप्लायर उसको मिल जाता है, मैं अगर अपनी बात करूं ऑनेस्टली, आर्क्रोमा की बात करूं, अगर हमें मिल जाता है खुशी खुशी उसके पास चले जाते हैं, यार तुम दे दो हमें, यू नो, दिस इज द सिचुएशन। Because you know, in any time of the day, that local supplier is more efficient for you than कि आप किसी और पे बाहर वाले पे chance. Sorry, we are going over time, but can we have 10 more minutes of yours? So up to 10 minutes. जी sure. Yeah, please continue saying, Mr. Rahim. मैं ये कह रहा था कि इस मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के वो लोकलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। देयर आर चैलेंजेस, ऑफ कोर्स लोकलाइजेशन के अपने चैलेंजेस हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर बेसिक केमिकल इंडस्ट्री नहीं है, बट हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट है, इफ आई कंपेयर माय कन्वर्जन कॉस्ट विद चाइना और इंडिया, जो भी इस वक्त केमिकल के ग्लोबल प्लेयर्स हैं, तो मैं उनके मुकाबले में कॉम्पिटिटिव हूँ। दिस इज व्हाई I can export to China, and I was, you know, in the past जब embargo नहीं था, इंडिया को मैं एक्सपोर्ट कर रहा था यहाँ से, इंडिगो का जो हमारा ये प्रोडक्ट है। आप सोचें कि इंडिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है केमिकल की, मैं इंडिया में कम्पीट करके हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट है दैट इज मच बेटर और competitive as compared to India or other parts in this segment. Another question, please share your per ton capex cost in USD terms for establishing liquid car indigo plant. मतलब ये अगर बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे तो एक डिफरेंट होगी केपेक्स की कॉस्ट, और आज की जैसे अभी हमने एड ऑन्स किए हैं तो इट वाज नॉट सो मच फॉर अस। लेट्स पुट दिस वे, I will need to see the numbers कि कितना केपेक्स की जरूरत है अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कोई प्लांट लगाते हैं। तो अगर आप ही लगाते हैं तो कितना लगेगा? ये इस पे डिपेंड करता है आप कहाँ लगा रहे हैं। अगर आप आज लाटी में लगाने जाएं तो आप मतलब ये फिजिबल ही नहीं है प्लांट, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है लाडी में, कोरंगी में, कराची के अंदर लैंड, कि आप इसकी लैंड की कॉस्ट सुन के ही आप जो है प्रोजेक्ट शेल्फ करते हैं। कल ही हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर इफ्लुएंट की ट्रीटमेंट, हाँ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट अपनी जगह। एंड व्हाट अबाउट जामशोरो? जामशोरो हमारे पास तो हमने 1964-65 में ये लैंड लिया था, तो आप अंदाजा लगा लीजिए जामशोरो में उस वक्त क्या कॉस्ट थी और आज क्या कॉस्ट होगी लैंड की। दूसरा जो हम बात करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जामशोरो में, देयर इज जीरो डिस्चार्ज। अगर हमें आज भी वहां पे हमारे पास 100 एकड़ का लैंड है, वहां पे अगर हमें कोई एक्सपेंशन करनी है तो वर्सेस कोई नया प्लेयर आता है, तो आई मीन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस कि वो जो हमारे पास एक सॉर्ट होता है ना कि अर्ली एंट्री एडवांटेज है, वो हम कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है
कि हम आसपास की कम्युनिटी को पानी भी दे रहे हैं, साफ पानी भी दे रहे हैं, दरिया में कुछ डालते भी नहीं है, बराबर में एक फैक्ट्री है, उसको पूरी सेफ्टी की सर्विसेज देते हैं, उनके लिए इंसिनरेट करते हैं, उनके लिए भी फ्लूइड ट्रीट करते हैं। मतलब इस किस्म की सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि विच इज आई मीन अगर आप बिल्कुल स्टैंड अलोन देखेंगे तो शायद नहीं समझ पाएंगे, बट अगर आप पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कुछ और ही होगा। तो ये अगर जामशुरू भी इफ यू वांट टू एक्सपैंड लाइक लेट्स से बाय 2000 टन्स, उस पे कितना कैपेक्स आएगा? तकरीबन हमारा $500,000 का $500,000 क्योंकि हमारे पास देखिए वहां पे ऑलरेडी जब हमने प्लांट लगाया था तो वी हैव केप्ट सर्टेन प्रोविजंस हमने अच्छे टाइम पे फ्यूचर को देखते हुए कर लिए थे, जिसका हमें अभी बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर मतलब वो प्रोविजन नहीं होते तो इट कुड हैव बीन इजीली $1.52 million। ठीक है। और इसका ना पीछे हिस्ट्री में काफी सारी चीजें हैं। अगर आप नाइट्रोजन खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, बिजली की कंजम्पशन किस तरह से हो रही है, एनर्जी का कंपोनेंट क्या है, कोई वही वाली बात है कि फ्लूएंट का ट्रीटमेंट है क्या, मीन दीज आर ऑल एड ऑन्स। अब अभी इस सिचुएशन में हम करेंगे तो यस आई थिंक वी कैन स्टिल डू इट। Where does the company buy crude indigo from? चाइना से आता है। सब there are a lot of people asking about the Huntsman के उसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन कितनी है? Ifan can reply to that। अभी हमने रिसेंटली सारा अनाउंस किया है अबाउट यूं समझ लें $11 million की सेल होगी उनकी, और $11 million? जी ठीक है। एक्चुअली इस तरह से है कि अगर आप लोकल अकाउंट्स देखेंगे ना तो लोकल अकाउंट्स में शायद आपको नहीं नजर आएगी। हम इसको इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में हंट्समैन इंपोर्ट करके कितना बेच रहा है बेसिकली, बिकॉज इंडेंट होता है ना, तो दे आर इंपोर्टिंग। जो अभी मॉडल है वो इंपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर एंटिटी से, चाइनीज एंटिटी से, और सेल कर रहे हैं। सो दे हैव अ मार्केट शेयर। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अगर हमारे पास $100 million की मार्केट है तो उनके पास $10-11 million की मार्केट, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। So right now they're just indenting. They don't have any manufacturing facilities in the country. उनके पास है, वो टोलिंग करवा रहे हैं आईसीआई से बेसिकली। तो टोलिंग एग्रीमेंट है, बट वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए है। वो बहुत, मेरा ख्याल है उसका $500,000 की सेल होगी, विच इज नथिंग। वो उनके लिए भी 5-7% है, इनली इम्पोर्ट है। What is your vision for the company? Where do you see that these numbers going 5 years down the road? The top line and the हम लोग तो बात करते हैं $500 million की सजाद, हंट्समैन पे हम काम नहीं, हम टोटल की बात कर रहे हैं, बिकॉज हंट्समैन की अभी हम बात कर रहे हैं तो हंट्समैन को हमारा टारगेट है कि इसको हम 10 times करें, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, रेंज है, दे कैन आल्सो कम अप टू 100 million। दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। बट जैसे जितने प्रोजेक्ट्स की हमने बात की, ये कम से कम जैसे कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, जितने अभी हमने पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, वी आर टारगेटिंग अ मार्केट ऑफ अबाउट $15-20 million। होम केयर की अगर हम बात करें, पीएनजी, कोलगेट, ये जो बिजनेस को अभी हम जितने प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, दिस इज रफली अ मार्केट ऑफ $15 million। और इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, जिसपे हमने पीछे कुछ महीनों काफी काम किया है, और अब उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो वी आर जस्ट एट द स्टेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। So future, we see very bright future for Archroma in Pakistan. And what is the timeline for these targets that you have mentioned? इसमें जैसे ये जो, जैसे अगर मैं होम केयर की बात करूं तो इसमें हम मार्केट में एंटर हो गए हैं। ठीक है, अभी हमारे पास लेस देन 10% की मार्केट है। हम स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे हैं कि हम 25-30% पे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में अभी तो हमने ट्रायल मार्केटिंग शुरू की है बेसिकली। So it's all open for us कि वो कैसे और कब आती है। We are working with some partners कि इसको किस तरह से लॉन्च करना है। तो टाइमलाइन थोड़ी सी आप इसको मीडियम टर्म ले लें। जितने भी ये प्रोजेक्ट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 2 से 3 साल लगेंगे इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होने में। अभी तो हम शायद कुछ $1,000 या कुछ $1,00,000 की बात कर रहे हैं by the end of this year, but next couple of years these numbers will grow. Please share the reason behind the 4 billion rupee increase in trade receivables. Is company not able to pass cost without credit? Basically devaluation है। Basically देखें, हमने किया ये है कि जो ये हो रहा था डॉलर के साथ, तो हमने अपनी प्राइसेस लिंक कर दी हैं डॉलर से। अब हम मार्केट में सेल करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, हम नहीं कर रहे। जैसे गाड़ियां भी आपको पता है, लोग प्राइस बढ़ा देते हैं।
तो हमने भी हमारी रोजाना की प्राइसिंग जो है डॉलर में लेट्स से $1 है, लेकिन अगर आज डॉलर का रेट 300 रुपए तो वो प्राइस 300 रुपए किलो होगी, कल अगर 290 हो जाता है 290 होगा। तो जो रिसीवेबल का नंबर आपको नजर आ रहा है वो रुपए में नजर आ रहा है, बिकॉज रुपए में भी हमारी सेल उसी हिसाब से बढ़ गई है या प्रोडक्ट की कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ गई है। तो बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखेंगे तो हम नेगेटिव हैं पिछले साल से। Will Archroma issue new shares for the acquisition or 0.0455 swap ratio will be realized through currently issued shares? हम नए शेयर इशू करेंगे ना, हमें देने पड़ेंगे इनको स्पॉन्सर्स को, डेफिनेटली देने पड़ेंगे टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ फंड्स। Done. Pansa, I think we are done with the questions. If you want, you can give the concluding remark. नहीं, thank you very much to you, to Sara and to Atif especially, जिन्होंने पहले पुश किया कि अब जो है ना वो इतना टाइम हो गया आर्क्रोमा को कि आ जाना चाहिए और इस तरह की एक सेशन जो है ना वो कर लेना चाहिए। तो आई थिंक इट वाज अ गुड टाइमिंग आल्सो कि जिस टाइम पे ही कॉल्ड ये करना चाहिए, तो हम भी अच्छा है, इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस हियर एज वेल एंड इट्स गुड टू टॉक टू the community and also answer questions and learn, I would say. Make this idea is a regular feature, maybe quarterly or maybe 6 months, so that our interaction keeps on going. जरूर कुछ सवालात जो ऐसे थे जो बहुत स्पेसिफिक थे, अगर हमने नहीं जवाब दिए तो if you can just send to me, मैं आपको दे दूंगा उनका स्पेसिफिक जवाब भी। So then we'll write a follow up on that and we'll disseminate your answers to the investors. Thank you very much. Then thank you. Mujtaba Saab, thank you Irfan bhai. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.